So after this session by Dr. Rajarshi, we move on to the next session, choosing the study design for your thesis research. So this session will be by Professor Dr. Dheeraj Shah. He is a director professor of pediatrics and faculty in charge of medical education unit of UCMS and GTB Hospital. So over to you, Dr. Dheeraj. I can introduce you a much lot. The past this editor of Indian Pediatrics and so many accolades and laurels. So over to you, Dr. Dheeraj. It's a pleasure to have. Thank you, Amit. I hope I am audible. Yes, sir. Very much. Okay, so I'll just share my screen and go ahead. Okay, so I'll just. Okay, so I hope now my PowerPoint is also visible. Yes, sir. Yes, sir. PowerPoint is visible. You can put it on full screen mode. Yeah, doing that. Thank you, Dr. Amit. So this session is about study design. So in this session, the main objectives would be to make you aware about the various types of study designs and how to recognize and how to decide which study design will be most suitable for your thesis. So before that, I would just take an MCQ, multiple choice question, and you can type the answers in chat box. So the question is, what is the best type of study design? A, population based cross-sectional survey, B, cohort study, C, case control study, D, randomized control trial, and E, meta-analysis. So I have not told you about all these terms, but I hope I know that many of you would have heard of these type of studies. So I'm waiting for the answers. 2 minutes in the chat box. Okay, so we'll just try to see the chat box. So I'm not sure whether I'm not able to see any answer or okay, E. So people have put many people have put D and E. Okay. Oh, so lots of E. I didn't expect that. And one LOL also. Yeah, because somebody had written meat analysis, so that has to be LOL. So okay. So okay, thank you for putting so many answers. So the answer to this question is that I'm afraid that the answers are not correct. So there is no best study design. So all of these study designs are good in their own way, and all of these study designs have their importance depending on the objectives. So it is not that one design is better over the other or one design is the best. So the research question or the type of objectives and outcomes you are planning. So in yesterday's session, you must have got some knowledge about the outcomes and objectives. So depending on what are your main objectives of the research, the study design has to be decided. So for maybe I'll give some examples later in the course. So it is not that meta-analysis is the best type of study design. It may be rated high in the hierarchy of the if you have the same question answered by different types of studies, it may be rated higher in the hierarchy, but meta-analysis is also possible only when you have the original studies. It is not in primary kind of study. It is a secondary study design where you analyze all the studies which have already happened. So the answer is there is no, actually none of this is correct. So this was just to begin. So the objectives of this session is to discuss about the types of study designs which are commonly used in medical research
and to be able to decide the appropriate design for your research question. So your research question determines the type of study, not what is the best. So there are mainly two types of study designs. One where you observe, कुछ करते, कुछ हमने इंटरवेंशन नहीं किया, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया, जो हो रहा है हमने देखा. The second type of study design is that we intervene. In this picture you can see this girl putting some manure, doing some kind of soil maneuvers too, and later on she will see how the plants grow. So she is doing some intervention. So with this background, I'll just give you one research question. The first research question is, what is the prevalence of cataract in elderly population? And I want answers from you, whether it is observational or interventional, A or B. Oh, so unfortunately I have to go back to the thing to see the chat box every time. Okay, so I'm waiting for the answer. A, observational. Aisha has answered of A. Okay, so lots of A. So observational study है, क्योंकि हमने इसमें कुछ इंटरवेंशन नहीं किया, हमने जाके देखा, पॉपुलेशन में गए, एल्डरली पॉपुलेशन डिसाइड किया किसको कहते हैं, और हमने एक मेथोडोलॉजी से, जो भी हम वहां पर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट लेके गए या कोई टेक्नीशियन लेके या खुद गए, हमने देखना शुरू कर दिया कि इसको कैटरैक्ट है, और हमने कुछ उस कैटरैक्ट को करने की कोशिश नहीं की. सो योर आंसर इज करेक्ट, इट इज इन observational study. Okay, let us go to the next example in this series, which is the research question 2. Prevalence of peptic ulcer among the elderly population by doing endoscopy. So here we are going to see this elderly population going to do an endoscopy and see the presence of peptic ulcer there. So is it an observational design or interventional design? Again, I want A or B. Okay, here I am getting, I'm not sure where the previous, yeah, I am getting lots of B and few A there. So what makes you change the answer from A to B in research question 1 versus 2? I think it is the presence of some procedure, some equipment. हमें लगा A में तो सिर्फ A में भी equipment था, वहां पे भी हमने फ्लैश लाइट लेकर गए होंगे, टॉर्च कहते हैं हम लोग, या कोई हम कुछ लेके गए होंगे ना, स्लिट लैंप लेके गए होंगे, तो वो भी एक इक्विपमेंट है. यहाँ पे इतना बड़ा क्या इक्विपमेंट है जिसमें हमने बी कर दिया. सो ऑफन वी कंफ्यूज द प्रोसीजर्स, और इवन समटाइम्स इट कुड बी इवन ट्रीटमेंट और सम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर विद द इंटरवेंशन. तो एक प्रोसीजर का होना या एक टेक्निक का होना या टेक्नोलॉजी का होना डज नॉट मेक ए स्टडी एज इंटरवेंशनल. तो ये भी हमारी एक, जो लोगों ने बाद में आंसर किया है या कुछ ने आंसर किया है, तो दिस इज अगेन एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी. हम देख ही तो रहे हैं, इसमें हमने पिछले में हमने एक टॉर्च यूज की होगी, इसमें हमने एक एंडोस्कोप यूज कर लिया, वो भी एक तरह की टॉर्च है जो अंदर गई. तो people are often confused. I won't blame, people are often confused between कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और इंटरवेंशनल डिजाइन क्या है. लोग समझते हैं कि ऑब्जर्वेशनल कम है तो हम एक दो इक्विपमेंट डाल देते हैं तो इंटरवेंशनल हो जाता है. सो इट इज नॉट लाइक दैट. सो आई कम टू हाउ डू यू डिसाइड ए स्टडी इज ऑब्जर्वेशनल और इंटरवेंशनल लेटर इन द कोर्स. सो द आंसर, तो अब हम इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक ये 3 क्वेश्चन अप्रोच है. courtesy डॉक्टर आमिर, I think is the main person who has simplified the approach to study design, and he has given this concept of 3 question approach to study designs. तो ये अब हम ये जो सेकंड क्वेश्चन था उसको हम देखते हैं दोबारा से. This question was about what is the proportion of elderly having peptic ulcer as diagnosed by endoscopy. So here there are 3 questions. The first question is, are we trying to modify or change the outcome?
तो आउटकम यहाँ पर क्या है, पेप्टिक अल्सर, कि कितनों को पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर का होना या नहीं होना, प्लस माइनस, ये आउटकम है। और अब हम यहाँ पर द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर वी ट्राइंग टू मॉडिफाई और चेंज द आउटकम? क्या हम कुछ पेप्टिक अल्सर का जो प्रोपोर्शन है किसको है या नहीं है, ये क्या हम किसी तरीके से चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं? सो हियर द आंसर इज नो. So this study as observational, not interventional. Now we further go into this thing. Do we have more than one group or comparator? इसमें दो ग्रुप है कि नहीं है? तो इसमें एक ही पॉपुलेशन है, सब एल्डरली हैं, तो वो एक ही ग्रुप है. So this becomes a descriptive study. Sometimes people get confused कि दो ग्रुप तो हो जाएंगे, एक को पेप्टिक अल्सर होगा, एक को नहीं होगा. लेकिन ये एक ही आउटकम के दो पहलू हैं, yes और no. That doesn't make them two group. अगर हम जिनको पेप्टिक अल्सर नहीं है और जिनको पेप्टिक अल्सर है उनमें कुछ कंपैरिजन कर रहे होते कि उनकी कुछ एज अलग अलग है, जहाँ पे हम तो सिर्फ प्रेवलेंस देख रहे हैं कितनों को है, तो ये एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी है. देयर आर नो टू ग्रुप्स हियर. द ग्रुप इज ओनली वन एल्डरली पॉपुलेशन एंड द आउटकम इज yes or no. And then, is the data collection being repeated from the same subjects after some time? So this is the third question. If there is no data collection being repeated, data collection का मतलब है same information being repeated. Data collection का मतलब ये नहीं है कि एक दिन हमने उसका नाम और उसके सारे सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स नोट कर लिए, क्लिनिकल फीचर्स नोट कर लिए, उसके बाद 3 दिन बाद उसको एंडोस्कोपी की डेट दे दी और 3 दिन बाद एंडोस्कोपी करी तो वो लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी हो गई. नो, तो वो हमने सेम डेटा बार बार पीरियोडिक इंटरवल पे कलेक्ट नहीं किया. अगर हम इसी स्टडी में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखते, 6 महीने में जो जिनको एंडोस्कोपी हो रही है, जिनके पेप्टिक अल्सर है, अगले 6 महीने में कितना बढ़ता है या कितना ठीक हो जाता है, तो दैट वुड हैव मेड दिस स्टडी एज लॉन्गिट्यूडिनल. तो ये स्टडी एक सिंगल टाइम पे हमने देखा पेप्टिक अल्सर है या नहीं है, तो दिस इज क्रॉस सेक्शनल. So if we need to, if we answer these 3 questions for this research question, so this becomes an observational study, this becomes a descriptive study, and this becomes a cross-sectional study. So it becomes a cross-sectional observational kind of study, and it is descriptive. तो इसको हम एक तरह का सर्वे कह सकते हैं. Okay, now going to the same topic of peptic ulcer. Now a cross-sectional study finds that milk drinking is associated with peptic ulcer. तो ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो सकता है, क्या हो सकता है इसका मतलब? मिल्क ड्रिंकिंग से पेप्टिक अल्सर होता है या मिल्क ड्रिंकिंग के पेप्टिक अल्सर नहीं होता है? एसोसिएशन है, ये नहीं पता हमें कि किस तरफ है. ये भी नहीं पता ज्यादा मिल्क पीने से हो रहा है कि कम मिल्क पीने से हो रहा है. So let us first correct this statement, okay, in a better way. A cross-sectional study finds that drinking milk up to a certain extent, beyond certain extent, is positively associated with peptic ulcer. तो हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन हुई कि हाँ ज्यादा दूध पियेंगे, इतने से ज्यादा, तो उससे पेप्टिक अल्सर हो सकता है. ये इमेजिनरी है, इसको ये समझ मत लेना कि ये ट्रुथ है. तो दिस इज जस्ट अ सिचुएशन वी हैव क्रिएटेड. Now the problem with this kind of data is, yes, there is an association, but you cannot comment on the cause-effect relationship. You cannot comment on temporality in cross-sectional studies. ये सिर्फ association दिखा सकता है, cause-effect नहीं बता सकता. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो सकता है कि जो हो सकता है कि हमें ये नहीं पता कि मिल्क पहले उसने पिया उसके बाद पेप्टिक अल्सर हुआ, कि जिसको पेप्टिक अल्सर था उसकी वजह से हो सकता है वो ज्यादा मिल्क पी रहा हो सकता है उसे किसी ने बता दिया कि पेप्टिक अल्सर हो तो दूध फायदेमंद है, या उसे आराम पड़ता हो पेप्टिक अल्सर में मिल्क पीने से थोड़ा थोड़ा, वो बार बार पीता है. तो हमें ये नहीं पता कि वो ड्रिंकिंग मिल्क उसका कॉज है कि उसका इफेक्ट है. देयर कुड बी थर्ड रिलेशनशिप ऑल्सो. हो सकता है कि जो कुछ भी हो सकता है, जो हो सकता है कि जो लिकर ज्यादा पीते हैं वो दूध भी ज्यादा पीते हैं उसके साथ साथ. तो हो सकता है वो जो अल्सर है वो लिकर से हो रहा हो, या हो सकता है वो स्मोक ज्यादा करते हो जो मिल्क ज्यादा पीते हैं. सो दिस relationship could be because of either it is not a cause, it is an effect, or it could be because of no relationship between these two. It could be a third factor which is associated with both. वो भी उसके साथ भी associated है, इसके साथ भी associated है, और हो गया. So that is the problem with cross sectional
study. But the take home message is that if you have to estimate frequency of something, proportion of something, you have to do a cross sectional study. ठीक, हमें देखना है सिंपल किसी भी सवाल का आंसर चाहिए हमें कि कितनों में ये पाया जाता है प्रॉब्लम. So how many patients with rheumatic fever they have congestive heart failure at the presentation. So this becomes a just simple estimation. It's a cross sectional kind of study, and it is one of the most common design done followed in the postgraduate thesis work. अब एक हम रिसर्च क्वेश्चन थर्ड पे आ गए. व्हाट इज द रोल ऑफ रैपिड टेस्ट इन द डायग्नोसिस ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मलेरिया. इसमें भी हमने patients थे 742. They were attending the outpatient department of a hospital. They had clinical suspicion of malaria, and for each patient thick thin film बनाई और एक रैपिड टेस्ट किया. और हमने देखा कि जो टेस्ट है वो किस तरह का उसका परफॉर्मेंस है एज कंपेयर टू द थिक थिन फिल्म. सो दिस इज अगेन हम इसमें 3 क्वेश्चन की अप्रोच लगाते हैं. Are we trying to modify, change the outcome? So here we are doing the peripheral smear. We simple antigen test. तो उससे कुछ हमारा आउटकम जो है वो तो चेंज नहीं होगा. हम कुछ मॉडिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम डायग्नोसिस को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. So this becomes an observational study. So diagnostic studies are essentially observational studies. Then do we have more than one group or comparator? यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है. कहेंगे कि 2 ग्रुप हो गए, एक एंटीजन हो गया, एक ग्रुप हो गया मलेरिया थिक स्मीयर वाला. लेकिन वो तो सेम पॉपुलेशन पे हमने 2 टेस्ट लगाए हैं. द पॉपुलेशन इज सेम. So we are not comparing results between 2 different groups. हमने तो सिर्फ परफॉर्मेंस देख रहे हैं. इन सब में कितनों में वो पॉजिटिव आया और कितनों में फिल्म पॉजिटिव आया और उन दोनों में क्या रिलेशनशिप था. So we are not comparing 2 groups. So it becomes a descriptive study. Is the data collection being repeated from the same subjects after some time? Again no. एक में thick thin smear किया, एक में हमने साथ ही में हमने या थोड़ी देर बाद हमने एंटीजन टेस्ट कर लिया. So there is no similar kind of data being repeated after some interval. So this becomes a cross sectional study. तो ये भी वैसा ही बन गया, observational, descriptive, cross sectional. So essentially the diagnostic studies when we want to demonstrate whether a new diagnostic test is valid or reliable, the preferred study design is cross sectional. Screening करनी है, पता लगाना है कि any test which is done in the large population it can pick up disease early. कुछ कैंसर को early diagnosis कर लेगा pap smear. Again the preferred study design is cross sectional. तो ये क्रॉस सेक्शनल टाइप की स्टडीज हैं जो कि डायग्नोस्टिक टेस्ट को कहते हैं. जो पुरानी हमारी प्रेवलेंस वाली स्टडीज थी उनको कहते हैं सर्वे. सर्वेज आर आल्सो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज. दे आर क्रॉस सेक्शनल डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशनल स्टडीज एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट स्टडीज आर आल्सो क्रॉस सेक्शनल काइंड ऑफ स्टडीज. तो ये सेकेंड मैसेज है हमारा कि डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग स्टडीज आर आल्सो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज. Now, what is the prognosis of newly diagnosed young adult patients of rheumatoid arthritis? इसमें हमने शायद we will enroll young adults, define their ages, they are having rheumatoid arthritis. What we are going to do, how are we going to see the prognosis? We will probably measure some outcome here, जो recovery के outcome होंगे, जो disease के outcome होंगे, जो survival के outcome होंगे कि अलाइव है या डेथ हो गई है, या हमने देखा कि उसके कितने जॉइंट अफेक्टेड हैं, हमने देखा कि जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट की सिविरिटी क्या है. एक बार हमने देखा, उसके बाद हमने 3 महीने बाद देखा, फिर हमने 6 महीने बाद भी देखा. तो दिस बिकम्स इसमें 3 क्वेश्चन की अप्रोच लगाएंगे. तो क्या होगा? आर वी ट्राइंग टू मॉडिफाई चेंज द आउटकम हेयर? अगेन वी आर नॉट ट्राइंग टू चेंज. वी हैव नॉट डन एनीथिंग टू और एनीथिंग इंटरवेंशनल, एनीथिंग एक्सपेरिमेंटल. जो उसका रूटीन केयर है, जो दवाइयां हैं वो चल रही हैं उसकी, उसी पे हम प्रोग्नोसिस देख रहे हैं. तो हमारा जो डिपेंड्स, हमारा जो वैलिडिटी है, वेदर इट इज आफ्टर
ऑन विदाउट एनी ट्रीटमेंट हम प्रोग्नोसिस देखना चाह रहे हैं कि ये कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट देख के प्रोग्नोसिस देखना चाह रहे हैं, तो देख तो हम उसको पीरियोडिकली बस देख रहे हैं. सो देयर वी आर नॉट डूइंग एनी इंटरवेंशन, वी आर नॉट डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट हियर. डू वी हैव मोर देन वन ग्रुप कंपैरेटर? अगेन नो, उसी पेशेंट को हम देख रहे हैं बार बार. Is the data collection being repeated from the same subjects after some time? Here the answer is yes. So it becomes a longitudinal study. So it is a, again, it's a descriptive observational but longitudinal study. So these are the studies which help us to find the prognosis of various diseases. What happens in the natural course or what happens after a particular standard treatment. Now coming to causation. Many times we have to see whether there is a cause-effect relationship between the two agents, between the two parameters. Suppose we want to know, our research question is, does mobile phone radiation exposure cause cancer? Mobile phone radiation के exposure से cancer होता है कि नहीं होता है? तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? What type of study we will do? Would we do an observational study? Would we do an experimental study? तो अब हम आते हैं कि होता क्या है. So one is case control study. In case control study, but we start from the population, and we decide the groups, 2 groups based on whether the illness is present or not, and then we go back in time and find out whether they have exposure to a risk factor or not. So in this type of study, what we have is a population. Out of this population, there would be people with cancer, various type of cancer we are interested in, and there would be people who do not have any cancer. And then we are going to analyze over a period of time, जो कि हमें biological plausibility बताएगी कि हाँ कितने सालों में exposure के बाद होगा. So we'll go back in time, say maybe take history of last 5 years about the exposure of mobile phones. Will have some parameters कि हाँ मोबाइल टावर से कितनी दूर उनका घर था या कितने मोबाइल पे कितनी देर बात करते थे. जो भी हम एक्सपोजर को डिफाइन करेंगे वो हम उनसे पता लगाएंगे. So this is a classical research question which can be answered by a case control kind of design. तो हमने 2 ग्रुप बनाए इलनेस के बेसिस पे है कि नहीं, और हम पीछे गए. पिछला हमने पास्ट में एक्सपोजर उसका हिस्ट्री लिया या उसके डॉक्यूमेंट्स देखे और हमने डिसाइड किया कि ये exposed है कि नहीं है. Another thing we could have done is a cohort. Cohort is the study design where we make 2 groups based on the presence of exposure or not. यहाँ पे हमने illness के बेस पे ग्रुप नहीं बनाए. Subjects healthy थे शुरू में. We divided them into 2 groups. One group was exposed to radiation, mobile phone radiation. One group was not exposed to mobile phone radiation. हमने देख लिया जो मे बी एक टावर के आसपास रहते थे या एक सिटी में रहते थे जहाँ पे मोबाइल फोन बहुत यूज होता है, दूसरे सिटी में नहीं है. आजकल तो ऐसा होता नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. इफ देयर इज अ सिटी वेयर मोबाइल फोन टावर्स आर नॉट देयर, you can divide them into 2 groups and follow over a period of time, many years. After that you see whether how many of them developed cancer in this group and how many developed cancer in this group. तो रिसर्च क्वेश्चन वही है, 2 तरह से आंसर हो सकता है, लेकिन हमें डिसाइड करना पड़ेगा. बिकॉज दिस इज ए रिसर्च क्वेश्चन विच दिस कोहॉर्ट स्टडी डूइंग रिसर्च, answering a research question like that in form of cohort study would be a very difficult task. ऐसे ग्रुप ही नहीं मिलेंगे पहले, तो ग्रुप भी मिल गए तो आपको आगे जाके फॉलो अप कितने सालों तक करना है. क्रॉनिक डिजीज है, हो सकता है आपने 1-2 हजार लिए, किसी को भी नहीं हुआ तो आपका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा. सो rare outcomes which have very long period between exposure and disease, they are not suitable for cohort, so they are more suitable for cross sectional. अगर हम इसमें देखें तो ये जो 3 क्वेश्चन अप्रोच में ये कहाँ फिट होंगे. 3 क्वेश्चन अप्रोच को देखेंगे तो हम, आर वी ट्राइंग टू मॉडिफाई चेंज द आउटकम? अगेन नो. आउटकम अपने आप हो रहा है, एक्सपोजर हो रहा है. So they are observational studies, but here we have more than one group. In cohort, we have more than one group based on presence and absence of exposure.
and in case control, we have two groups based on presence or absence of disease. So they are analytical studies. So they are observational analytical studies, case control and cohort both. Cohort is a longitudinal study, whereas case control is mainly a cross-sectional study, because here you are not going to follow them up, but you are recording their exposure in the past. So if you want to find the causal association, you have to do a cohort or case control study. Now coming to the therapeutic question, many of you would be doing thesis or research in clinical subjects. तो clinical subject में कई बार clinical queries होती हैं, कोई दवाई या कोई adjunct या कोई intervention या sometimes even a message, a kind of health education message, जैसे community medicine में हो सकता है, whether that is effective or not. So these are therapeutic questions, and we need to know how can we approach this research question. So this research question is, what is the effect of vitamin D supplementation on recovery from severe pneumonia? तो अभी इसको हम देखते हैं क्या करना है 3 question approach में. So are we trying to modify, change the outcome? We'll go back to the research question. What is the effect of vitamin D supplementation on recovery from severe pneumonia? हाँ, हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि जो रिकवरी है वो कहीं ना कहीं हम उसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ये इंटरवेंशन करके. ये जो हम दे रहे हैं विटामिन डी, इसको देकर हम probably we want to improve the recovery. We are trying to modify the outcome. So here the question is yes. The answer to question is yes. Interventional. So this is an interventional study where we are trying to modify the outcome, trying to see whether the outcome is modified or not by doing an intervention. So here the intervention is vitamin D. Do we have more than one group comparator? From this research question, we do not know, but unless you have two groups, in one group you give vitamin D and another group you do not give, you will not be able to assess the whether there is an effect or not. हमने अदरक की चाय पिलाई, जुकाम ठीक हो गया, हमने कहा अदरक की चाय इफेक्टिव है, तो क्या ठीक है ये स्टेटमेंट? नहीं हो सकता है जुकाम कोल्ड अपने आप ठीक हो गया हो, बिकॉज वी नो दैट डिजीजेस आर सेल्फ लिमिटिंग. वी आल्सो नो दैट डिजीजेस में वर्सन. So just giving a drug and worsen ho gaya doesn't make, unless we have sufficient numbers, sufficient people in one group where the intervention is done and another group where the intervention is not done, and we see the difference in the outcome and we analyze them statistically, तभी हम कहेंगे कि वो treatment effective है या dangerous है. Just on the basis of one group, it is very difficult to say. Unless there is a disease जिसका कुछ हमें नेचुरल कोर्स पता है, क्योर होता ही नहीं है. सपोज किसी तरह का कैंसर है हमें पता है, या रेबीज है, 100% मोर्टालिटी है, उसमें हम दूसरा ग्रुप नहीं भी रखते हैं तो हिस्टोरिकल कंपैरिजन से हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमने देखा कि 50 पेशेंट में कुछ दवाई दी और उसमें से 40 ठीक हो गए. सो वी नो दैट देयर इज समथिंग इन दिस ड्रग, बिकॉज हिस्टोरिकली वी नो that this disease cannot have a self-limiting or improving kind of course. But most of the research questions like this, you will have to have two groups. So we assume that there are two groups. So they are analytical studies and the data collection being repeated from the same subjects after some time. So unless you repeat the data collection, you cannot find the effect. Recovery के पैरामीटर पहले देखेंगे, रेस्पिरेटरी रेट कितना था, फीवर था कि नहीं था, और उसके बाद में after some time 4 times देखेंगे. So all interventional studies practically they are longitudinal studies. So we are dealing with interventional analytical longitudinal study. So this is a classical presentation. So we have group of patients where one group we administer any treatment and the other group we do not administer treatment or administer inert treatment like placebo or administer any other treatment. Suppose you are comparing two antihypertensives. So you can have two different treatment groups. We will go to this group by some methods which may be called randomization and then follow up them over a period of time. So this is the longitudinal component and you compare the results. कि इसमें you can see that there are 3 here out of 5. 1 is treated, so you can compare statistically. तो हम ये जो
हॉस्पिटल के जो इन पेशेंट हैं उनको हमने स्क्रीन किया, उनमें से देखा हाउ मेनी ऑफ देम आर हॉस्पिटलाइज्ड विद सीवियर निमोनिया. Then we randomize them. We do a process called randomization, and we divide them to one group to receive vitamin D, and to other group either we administer inert substance like placebo or no vitamin D. And of course you will give standard treatment to both groups. Standard treatment जो भी उसका एंटीबायोटिक और जो सब कुछ होता है वो हम both group में एक जैसा रखेंगे. And after some time, depending on your intervention, here we expect कि निमोनिया वाले बच्चे सीवियर निमोनिया के 72 आवर्स में ठीक हो जाएंगे. तो हमने रिकवरी देखा and define कर दिया रिकवरी को. If the child is off oxygen within 72 hours, we define recovery. And if child is still requiring oxygen after 72 hours, we define no recovery. And we just compare how many in this group and how many in this group recovered, compare them statistically, and come to a conclusion whether vitamin D helps in recovery of pneumonia or not. So this is a classical picture or flow diagram for a randomized control trial. So this therapy effectiveness questions can only be answered by RCT. इसीलिए हम ये कह रहे थे क्योंकि बेस्ट डिजाइन नहीं है. अगर आपका ऑब्जेक्टिव थेरेपी है ही नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव डायग्नोसिस है, आप पैथोलॉजी में हो, माइक्रोबायोलॉजी में हो, तो आप आरसीटी तो नहीं करोगे अपने डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के लिए. आपको तो क्रॉस सेक्शनल डायग्नोस्टिक स्टडी करनी पड़ेगी. करनी चाहिए, पड़ेगी क्या. If your research question is finding the prevalence of something in of disease, तो भी आप क्रॉस सेक्शनल स्टडी करोगे. आपका रिसर्च क्वेश्चन है मोबाइल एक्सपोजर से या रेडिएशन एक्सपोजर से कैंसर होता है, आपको केस कंट्रोल डिजाइन करना होगा. आप आरसीटी नहीं कर सकते उसमें, आरसीटी फिजिबल ही नहीं है उसके अंदर, तो बेस्ट कैसे हो गया. So in conclusion, this is the, if you want you can take a screenshot of this picture in your computers devices. Again, this is a summary of what all I have talked today of various types of study design based on whether you assign exposure or not, whether you are doing any, you are trying to modify the outcome. You have answer is yes, it becomes an interventional or experimental study. If it is no, it becomes an observational study. If you have two comparison group, it becomes analytical study. If you have only one group, it becomes descriptive study. And in comparison group, in the observational, if you move from exposure to outcome, it becomes a cohort study. If you move from outcome to exposure, it becomes a case control study. In the experimental study, if you are doing a randomization procedure, I'm not going to cover it today. Randomization, the people who would do randomized trials, they would know from their supervisor what is randomization. So if you follow the procedure of randomization, it becomes a randomized control trial. And if you don't follow the procedure of randomization, it becomes non-randomized control trial. So meta-analysis, I'm not going to talk because with COVID being over, I suspect कि आपका किसी का meta-analysis या systematic review नहीं होगा. But even if you have a meta-analysis systematic review as a topic, I hope that your supervisor would be skilled enough to address your all research queries. Okay, so finally I've come to another question, multiple choice type. You need to study risk factors of obesity in 18 to 44-year-old adults. What study design will you plan for your thesis? A, cross-sectional survey, B, cohort study, C, case control study, and D, randomized control trial. This time I'm not getting any answer. I'm not sure whether. Okay, I'll project it again if. Okay, I'm projecting it again. You need to study the risk factors of obesity in 18 to 44-year-old adults. Which of the following study design will you plan for your thesis? 1, cross-sectional survey, B, cohort study, C, case control study, and D, randomized controlled trial.
Okay, I got C, I've got A, I've got B. Okay, I've got A, B, C. ओके गुड। एक तो अच्छा मुझे ये देखने को मिल रहा है किसी ने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं लिखा, दैट इज वन गुड थिंग, क्योंकि इसके अंदर रिस्क फैक्टर हमें देखने हैं, तो इसके अंदर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इज नॉट द अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ स्टडी डिजाइन। तो कोई बेस्ट स्टडी डिजाइन नहीं होता, यू हैव ओनली अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ स्टडी डिजाइन फॉर एवरी रिसर्च क्वेश्चन। अब मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने ए लिखा है, सी लिखा है, किसी किसी ने बी भी लिखा है। लेट अस अगेन गो बैक एंड try to resolve the confusion. Okay, 3A, 1B and 1, 2, 3, 4C. ऑडियंस पोल देखेंगे तो ठीक लिखा है, ऑडियंस पोल में तो सही हैं आप। सो जिन्होंने भी आंसर किया, केस कंट्रोल स्टडी इज द राइट आंसर। नाउ कोहॉर्ट स्टडी और क्रॉस सेक्शनल सर्वे यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते? लेट अस गो टू डी वाला, तो आप क्लियर हो गए शायद। क्रॉस सेक्शनल सर्वे व्हाट यू विल डू इज लाइक यू विल क्रॉस सेक्शनल में हमने देखा, हमने ओबेसिटी के लिए क्रॉस सेक्शनल में हमने सिंगल ग्रुप बनाया और हमने पहले बी की बात करते हैं, ए के फिर आएंगे। कोहॉर्ट स्टडी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको रिस्क फैक्टर देखने हैं ओबेसिटी के, तो आपको अगर कोहॉर्ट स्टडी बनानी होगी तो आपको एक रिस्क फैक्टर से स्टार्ट करना होगा। यहाँ पे हम ओबेसिटी हमें पता है और हम रिस्क फैक्टर मल्टीपल देखना चाह रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि क्या टेलीविजन ज्यादा देखने से ओबेसिटी होती है, तो हम फिर भी कोहॉर्ट स्टडी कर सकते थे कि हाँ देखते हैं जो टीवी ज्यादा देखता है और देखते हैं कम देखता है, उनको एक साल तक फॉलो कर लेते। वो भी एक स्टडी डिजाइन बहुत फिजिबल नहीं होता, किया तो जा सकता है, but again you won't know about the other risk factor and you won't know about other confounders. तो यहाँ पर हम केस कंट्रोल स्टडी कर पाएंगे because you will have to start from a group of participants who have obesity and a group of participants who do not have obesity, and you go back in time and take history of all the risk factors which may start from birth, about the birth weight, whether that is a risk factor or not, whether how the child grew during infancy, how many illnesses child got, what type of feeding was there, bottle feeding, breastfeeding, formula feeding. So you can enumerate all the possible risk factors and assess in these two groups. Now I would not blame जिन्होंने क्रॉस सेक्शनल लिखा है, तो ये करेंगे तो सारा क्रॉस सेक्शनली। हम एक केस लेंगे, कंट्रोल लेंगे, हम उनके पीछे के रिकॉर्ड तो नहीं छानने जा रहे, ऑल्दो केस कंट्रोल में हमें अगर रिकॉर्ड से मिल जाए कंफर्मेशन तो वो अच्छा रहता है। हम रिस्क फैक्टर देख रहे हैं मल्टीपल में, पर ये रिस्क फैक्टर और एक्सपोजर सेम टाइम में नहीं है। हम रिस्क फैक्टर पे हमें वहां से जाना पड़ेगा जहां पे ओबेसिटी उसको नहीं थी। सो दैट इज द डिफरेंस हियर। जैसे वो मिल्क और पेप्टिक अल्सर में हमने साथ साथ देखा कि पेप्टिक अल्सर भी था और मिल्क भी पी रहा है, हमें ये नहीं मालूम कि उसको पहले पेप्टिक अल्सर था कि नहीं था। सो और मिल्क अभी भी पी रहा है वो, सो दैट बिकम्स ए क्रॉस सेक्शनल। एंड क्रॉस सेक्शनल में भी आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो, दो ग्रुप ले सकते हो। तो इसमें भी कुछ फैक्टर हो सकता है एकदम क्रॉस सेक्शनल हो, बट मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स यू वुड गो बैक इन टाइम बिफोर द चाइल्ड वाज ओबेस एंड यू फाइंड आउट वेदर they were responsible for this condition of obesity. So basically it would be a case control study. Sometimes people say cross sectional के जो दो ग्रुप होते हैं जिनमें obesity नहीं है, एक में है और हमने risk factor पढ़ दी थी, क्रॉस सेक्शनल कंपैरेटिव स्टडी भी कुछ इस तरह की स्टडी के टाइप के लिए हो सकते हैं, जहां पर हम जैसे मैंने मिल्क और पेप्टिक अल्सर वाला एग्जांपल दिया, उसमें दो ग्रुप आप ले सकते हो, एक को पेप्टिक अल्सर है एक को नहीं है, और आपने दोनों का मिल्क कंजम्पशन साथ साथ देख लिया, तो वो एक अभी भी जो प्रेजेंट है। सो यू कैन हैव ए क्रॉस सेक्शनल कंपैरेटिव स्टडी डिजाइन इज प्रैक्टिकली, उसको भी केस कंट्रोल स्टडी जनरल लैंग्वेज में बोला जा सकता है कि एक केसेस है कंट्रोल है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स केस कंट्रोल स्टडी में एज्यूम करते हैं कि वो पुराना बैक इन टाइम बिफोर द डिजीज वाज प्रेजेंट वो वाला हो, और साथ साथ आप मेजर कर रहे हो एक्सपोजर और आउटकम, तो सेम पीरियड के, तो दैट बिकम्स ए क्रॉस सेक्शनल काइंड ऑफ स्टडी।
So I'll stop sharing. Okay, just before stopping, I'll just show you the summary slide. So the summary is, if you want to estimate prevalence, population prevalence, frequency, percentages, so you do cross-sectional studies or surveys. If you want to see the diagnostic utility, again you do a cross-sectional study which is called diagnostic accuracy study. If you want to see the prognosis or what happens to the natural course of a disease, you do a longitudinal study. If you want to see the association, do cross-sectional comparative study, a case control study. If you want to establish the causation, cause-effect relationship, do a cohort or experimental study. And if you want to assess a therapeutic intervention, efficacy of a therapeutic intervention, it becomes a randomized controlled trial. So I'll stop. I know with the limitation of online, I'm not sure how much message has gone across, but I hope by either speaking or by typing in the chat box. If you have any question, if you have any confusion, maybe some of you might have already been allocated a thesis topic, or you might be searching for a kind of research question to answer. So you can interact, you can ask what type of study design do you think would be the most suitable kind of study design for your, most appropriate kind of study design for your research work. Okay, if there are no questions, then I think we can. Dr. Amir, are you there? Yes, sir. Okay. Thank you, sir, for this session, wonderful session on choosing the appropriate study design. I have also shared the related articles from Indian Pediatrics on these topics, what were discussed today in their WhatsApp groups. So they can go through that, and if they have any confusion, any clarification, any time during their thesis work, then they can contact any of these facilitators also. So we come to the end of the second day. Now tomorrow we will be having the title, how to write the title, ethics, writing references, and sample size and statistical test. I request all the postgraduate students that tomorrow is the last day, make maximum use of these presentations that are happening. And tomorrow you please take some more, keep some more time, because the session will be from 5 to 7:30. As there are 4 topics. We didn't want to extend one more day. That is why we have tried to do it for half an hour more, but we have tried to pack it only in 3 days, so that you all can attend it comfortably. So with that, we end the session. Thank you all, and we hope to see you all tomorrow. Thanks to Dr. Rajarshi, Dr. Alpana, who presented today, and Dr. Farah and Dr. Chandar, who are there today to support us also. Thank you, Dr. Dheeraj. I close this presentation now. Thank you, Dr. Amit. Thank you all.